बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है सही करता है। ये हज़रत वासिफ अली वासिफ का कौल है। इसके अलावा अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे, ही कुरान पाक में जिक्र मिलता है। और कामयाब वही है जो अपने नफ्स को ख़त्म कर देता है। Whatever happens is by the will of Allah, and whatever happens is correct. And Allah gives respect to a person, and Allah gives disrespect to a person. It's everything in the hands of Allah. And successful is a person who is able to control his or her self. The very important thing that we have to remember in this training session and afterwards is that vision without action is a dream. Action without vision just passes the time, and vision with action can change the world. It's a very famous quote by Nelson Mandela. Here I would like to introduce myself. I'm the CEO of Talk 360 SMG Private Limited, which is a marketing, HR, IT, and business consultancy and training and development company. I'm the founder of Patriotism for Pakistan, which is a movement on social media for improving the image of Pakistan. I am the CEO and CTO of Creative Planetarium, which is an online software house, and it's in registration process currently. I'm the founder of Talk 360 Education 360 Initiative, which is providing affordable, high quality education for everyone, and it's an initiative of Talk 360 SMC Private Limited. These are the objectives for this training session. First of all, we will be understanding the kinds of businesses in Pakistan, and we will be understanding the types of businesses briefly, and we will be able to give everyday life examples for that. Then we will be understanding and acknowledging the importance of strong strategies to make a business successful. Then we will be understanding and realizing the value of SCCP in Pakistan and worldwide. Then we will be knowing the importance of business registration from SCCP. Then we will be understanding and acknowledging that why hiring a lawyer or a consultant helps a lot. Then we will be learning business tips for successful performance. First of all, we are discussing the types and kinds of businesses in Pakistan. The first type is sole proprietorship. In sole proprietorship, there is only one owner, and one owner can have several shops, but the ownership is limited to just one person, and that person is uh, the only person who can be liable for any loss in the business. Partnership is quite similar to sole proprietorship in operations, but it has more people working together. So this is how it differs from a sole proprietorship, but the mode of registration for a sole proprietorship or a partnership remains the same. SMG Private Limited is another type of business which has one director, and there can be another, you can say, company secretary or another employee, but there will be only one director. So that's how SMG Private Limited works. But you will have the privilege of a private limited company, because in case of a private or public limited company or a company registered by SCCP, you declare the company as a separate person. So that company will have a separate bank account, separate taxation records, and other buying and selling records in the name of that business. Then there will be a private limited company. For example, there is a famous school, Beacon House school system, which is known in terms of registration as Beacon House Educational Services Private Limited. If you find this name on SCCP, you will find it. Then there can be a limited company. For example, there is a software house systems limited. Then there can be an MPO or an NGO. And here I'm skipping the other types because we have lack of time, and there is not much need to discuss these things in detail. Now here I will be discussing how to make a business successful. It's a $1 million question where we can understand
the five W's of communication, like who, what, when, where, and why. Here we are understanding the seven C's of communication, which are correctness, clarity, conciseness, completeness, consideration, concreteness, and courtesy. So, in that case, we should be learning about these things in detail so that whenever a trouble happens in our business, we should be focusing on these areas. I will be explaining these one by one. Then we will be understanding the IDA approach, which is attention, interest, desire, and action. Then we will be understanding the SWOT analysis, which is strength, weakness, opportunity, and threat. Then we will be learning why communication is a must to sell a product or service or to win trust of clients, customers, stakeholders, and the community. Then we will be learning the POLS concept, which is known as planning, organizing, leading, and controlling. Then we will be learning the art of becoming a brilliant negotiator, campaigner, marketer, manager, strategic planner, and an execution expert. Now, how does that happen? It's the million-dollar question. How to make a business successful. Whenever you are starting a business, you have to face a lot of challenges. So, for that, what you have to do is you have to understand yourself first, and then you have to understand your business. So, whenever you are doing these things, there are so many aspects which you have to study and understand. Now, who, what, when, where, why can be applied on your business and can be applied on yourself as well. So, for example, who you are, what you want to be, when you want to be, where you want to be, why you want to be. That's how you are going to analyze yourself. Then you can discuss it in terms of business, like who is going to start the business, what the business is about, and when is the business going to start, and what is going to happen in that, and where is the business happening, and where is the progress going on, then why is the progress going on, and why is the business into existence. Then we have to understand the seven C's of communication, which are correctness, clarity, conciseness, completeness, consideration, concreteness, and courtesy. You can understand these by searching them one by one on Google. And I guess when you consider Google as your best friend, you will find a lot of stuff related to seven C's of communication. Correctness means anything which is lacking, errors. And clarity means everything should be clear. Conciseness means everything should be to the point and short. And completeness means that everything should be complete. There should not be anything that is incomplete. And consideration means that you keep empathy for the other people at rest. And concreteness means whatever information you are providing is strong enough to convince the other people. And courtesy means to be respectful in your tone. So this is how you are going to work with other people. Then you have to understand the idea approach, which is how you grab the attention of the other person. Here you have to understand the attention, interest, desire, and action approach, where you will get the attention of the other person, then you will develop interest in that person's mind, and then you will develop the desire, and then you will develop a course to action. So that person will be doing something which you want him or her to do. And there is another important analysis, which is SWOT analysis. Here, SWOT analysis can be done for a business or for an individual. So, in both cases, both are related to one another, but their approach is different. Also, we need to realize that communication is the key. If we fail in communication, then obviously we will fail as a business person. So, this is how we have to focus on our communication skills. And if we realize that why communication is important, we will know that communication is very important to sell a product or service successfully and to win trust of the stakeholders around you. Also, there is a concept like pulse, which means how you are able to plan something, how you are able to organize something, how you are able to lead as a person or as a business resource or as a CEO, and how you can control all the matters happening around you. Also,
You need to be a good negotiator. Like you need to know how to convince other people on several points. If you are not able to convince them on other points, then obviously those people can take misadvantage of you, and in that case, you will be hurt badly. So you have to take care of not being used, not being misused, in fact, and you have to take care of everything happening through you or through your business. So being a good negotiator matters a lot in that case. Now I will be discussing the modern importance of SCCP in Pakistan and worldwide. Well, if you don't know about SCCP, I want to tell you that it's the only business registration authority which is governed by government, in fact, managed by government, and it authorizes a business to exist nationally. I mean, and if you want to register a business in entire Pakistan, you will go to SCCP and get your business registered. You will have a head office at a particular city, at a particular location, but you will have existence nationwide. So if someone else comes with the similar name related to your business, he or she will be rejected and will have to get another name for his or her business. So that's how you get secured if you register your business nationally. All multinationals prove their credibility by registering in Pakistan. So that's how multinationals work. They coexist in multiple countries at the same time. SCCP fee collected by SCCP is used for the betterment of SCCP infrastructure, which includes obviously paying to the employees, and there can be other costs as well. SCCP registered companies are obviously trusted by clients, customers, stakeholders, and community, and this happens nationally as well as internationally, which is quite obvious to understand. SCCP registered businesses get projects and products or services related sales very quickly, safely, and successfully. Obviously, because people know that this business will not run away, this business will not do a spam or scam behavior, so they will be secured in that sense. The chances of fraud reduce obviously. People trust such businesses because these businesses are not going anywhere else. Also, these businesses focus on quality over quantity, and these are directly or indirectly supporting the economy of Pakistan. And obviously, the more we have registered businesses, the more we will see the reputation of Pakistan improving internationally. Now, here is a very important question which many of us fail to answer or consider even. Why hiring a lawyer or a consultant is important. First of all, we hire a lawyer to avoid errors in the technical documents which are required by SECP. If we don't do that, obviously we will be doing a lot of errors and a lot of mistakes, which is why our registration process gets slowed. And also, SECP can issue us warnings and errors in the future as well. Also, a consultant or lawyer will prevent any statement that could be problematic for the owners of business existence in the future. A lawyer or a consultant will also be supporting the lawyer and consultant community overall. Also, hiring a lawyer or a consultant will save your time and hassle of business registration because it takes a lot of time to register everything and do everything on your own. And I know that I did not hire a lawyer in my case when I registered my business, and in that case, obviously, I was facing a lot of trouble. I got into, I got a lot of delays, which is why I regretted. Okay, I should have hired a lawyer instead. But anyway, things happen, and I have a registered business, alhamdulillah. And if you want to make sure that everything is done perfectly and on time, then you should be hiring a lawyer or a consultant. Also, if you have a lot of things to focus on and there are other business areas where you are focusing, then you can have follow up handed over to a lawyer or a consultant. So that's how you will be saving your time in that sense.
Also, there are so many business tips for a successful business, but we need to realize that ups and downs are normal in a business. Like sometimes you will be at boom, sometimes you will be not earning profits at all, and you will be in loss. Also, you need to realize that overburdening yourself or your team will not help you anyway. If you do that, obviously you are stressing yourself, and it's not going to help you by any means. Never overcommit. If you do that, obviously people will say, okay, this person is overcommitting but is not doing anything on particularly, decided time. So that's how you will be facing a lot of trouble. Now you need to realize that inner customers are very important for your business. And obviously, who are your inner customers? Your employees are your inner customers. They will never disappoint your external customers if they are satisfied with what your external customers. Your external customers can be your consumers, who can be other businesses, or your customers, who can be directly people who are buying products from you or services from you. Now, focus on MOUs with several companies, because if you are doing something which you believe that should be done through a collaboration, then you need to do this thing, right? So you have to sign MOUs with other companies to achieve common goals or to work on projects with common interest, obviously. And you need to realize that earning a lot of profit is not, a one time effort, and it takes a lot of time to do that. Secondly, sometimes less profit is better than no profit at all. So you should be steady, you should be constant, consistent, sorry. But it does not mean you should start discouraging yourself that you're not doing anything at all, and so on. So you need to be consistent. That's important. Also, focus on quality instead of quantity. And when there is a must, say no. It's very important. People don't do that, and that's why they suffer a lot. Whether you own a small business which is registered or not, or whether you whether you have a registered business which is included in large scale businesses, saying no is important when it's a must. And you cannot be jack of all trades at the same time. So obviously you have to outsource a lot of things that you cannot do. But if you deny doing them, obviously the reputation of your business will suffer in the end. You need to trust people in your community. If you don't do that, obviously you will be uh, you know disrespected in your community. Try taking prepayments or set milestones. Obviously, if you don't do that, people will take misadvantage of you. They will give you orders, they will be asking you to work on them. If you will work on them, and then they will just come and say, oh, I was not able to pay you, or something like that happened, and so on, and they will keep on delaying payments, and this is how you will be facing losses. So never do that. Always take some prepayment or set milestones. Like milestone means that setting percentage of amount received related to any topic. Use bank transactions as a preference, and always make sure that everything is digital and accessible from multiple places. Never use a source which is just accessible from one source or one place, because in case if you lose access to that place or source, obviously your entire business or your entire process in a business can suffer. Work on social engine optimization of your business on the internet. It's very important, especially in the age of digital transformation. Everything is on internet. Everything is searched by search engine optimization engines. So this is how you have to work on SEO and other technicalities like that. You need to learn the process of businesses, like how these businesses work, and you need to be aware of the business terms as well. If you don't do that, those who know these terms will be taking misadvantage of you. I hope this session will be helpful for you. So here is some detail about contacting us on WhatsApp.
And also, whenever you are contacting, please do mention your name and your reference at who you are contacting to and what is the reason to contact. This is my contact information and my business contact information as well. So you can reach out to me through these information sources. Now I am doing this session in Urdu so that whatever I have said should be understood by the audience which understands Urdu. अस्सलाम वालेकुम जी। ये सेशन जो है पहले मैंने इंग्लिश में दिया है और अब मैं इसको उर्दू में कर रही हूँ कि हम पाकिस्तान में बिजनेस को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और वो भी ऐसा बिजनेस जो कि कामयाबी से रजिस्टर होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये कोट है जो हमने शेयर की थी, नेल्सन मंडेला की कोट है कि अगर आपके पास विजन है लेकिन एक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये सिर्फ एक ख्वाब है। और अगर आपके पास एक्शन है यानी आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आपके पास विजन नहीं है, आपके पास दूरअंदेशी नहीं है, तो आप सिर्फ वक्त का ज़िया कर रहे हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपके पास दूरअंदेशी भी है और आप उस चीज़ पे काम भी करना चाह रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। ये नेल्सन मंडेला का मानना है और ये मेरी ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा है जब से मुझे ये कोट पता चली। सबसे पहले मैं अपने बारे में तारुफ कराती हूँ कि मैं टॉक्सिक सिक्सटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ हूँ, जो कि मार्केटिंग, एचआर, आईटी, बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है और हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी करते हैं। पेट्रियाटिज्म फॉर पाकिस्तान की मैं फाउंडर हूँ। ठीक है, ये आपको सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आएगी। एक कैंपेन है, एक मूवमेंट है, एक कोशिश है, काविश है, जिसके ज़रिए मैं पाकिस्तान का जो सोच विचार है पाकिस्तान के बारे में उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को एक पॉजिटिव साइड जो है ना वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा क्रिएटिव प्लानिटेरियम की मैं सीईओ और सीटीओ हूँ, जो कि एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हाउस है और इंशाल्लाह करीब ये आपको रजिस्टर्ड भी नजर आएगा, अभी प्रोसेस चल रहा है उसका। उसके अलावा टॉक्सिक सिटी एजुकेशन 360 का इनिशिएटिव जो है उसको मैं देख रही हूँ, जो कि टॉक्सिक सिटी प्राइवेट लिमिटेड का ही एक प्रोजेक्ट है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कोर्सेज या ऐसी तालीम के ज़राए हम लोग लॉन्च करें जो कि सबकी पहुंच में होने चाहिए, किसी को कोई तंगी ना हो कोई कोर्स करते हो। इस सेशन में हम लोग दो चीज़ें जो है ना जहन में रखने लगे। एक तो ये कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हम लोगों को समझने चाहिए इसी तरीके से। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमने ये चीज़ समझ ली तो हमें उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अपनाना भी है। ठीक है, सिर्फ ये नहीं है कि बस आपने ये चीज़ें पढ़ ली हैं और आपने इनको रफा दफा कर दिया, इधर उधर कर दिया, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो हमारे हैं यानी कि हमारा जो मकसद है वो ये है कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह के बिजनेस मौजूद हैं। उसके अलावा ये कि हम हर तरह का जो बिजनेस है उसको देखेंगे और जो असल मिसालें मौजूद हैं हम उनको देख लेंगे। उसके अलावा ये कि अ, ऐसी कौन सी तरकीबें हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज हम बना सकते हैं जिससे एक बिजनेस कामयाब हो सकता है। फिर हम ये देखेंगे कि SECP की क्या वैल्यू है पाकिस्तान में और दुनिया भर में। इसके अलावा ये कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो है उसका उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हम उसको देखेंगे। उसके अलावा ये कि हम ये देखेंगे कि क्यों एक लॉयर या एक कंसल्टेंट को हायर करना ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं करते तो हमें क्या नुकसान हो सकता है और अगर हम ये करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। फिर हम ये देखेंगे कि हम ऐसी क्या टिप्स अपना सकते हैं, ऐसे क्या तरकीबें अपना सकते हैं जिससे हम अच्छी परफॉर्मेंस हासिल कर सकें। सबसे पहले हम बिजनेसेस के एग्जाम को देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें सिर्फ एक मालिक होता है। ठीक है, और ये बिजनेस जो है सिर्फ एक शहर के अंदर रजिस्टर हुआ होता है, यानी कि ये दूसरे शहर में भी रजिस्टर्ड नहीं होता। ये एक शहर में जैसे किराना स्टोर है और जैसे छोटी मोटी दुकानें आपको नजर आती हैं अक्सर सोल प्रोप्राइटरशिप होती हैं। ठीक है, इनका तरीकाकार काम करने का ये होता है कि ये जो
दुकान के मालिक होते हैं, जो प्रॉपर्टी वो खरीदेंगे, जो चीज़ वो बेचेंगे या खरीदेंगे, वो उनके नाम पर बिक्री होगी या सेल हो रही होगी। इसी तरह वो अपना ज़ाती बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहे होंगे कोई भी खरीदो फरोख्त करने के लिए, कोई भी कारोबार करने के लिए एज अ सोल प्रोप्राइटर। उसके अलावा पार्टनरशिप में देख लें तो पार्टनरशिप में भी यही तरीका कार इस्तेमाल हो रहा होता है, यानी उसमें भी जितने लोग काम कर रहे होते हैं, जितने लोग काम कर रहे होते हैं पार्टनरशिप में, जितने लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, वो भी इसी तरीके से काम कर रहे होते हैं। मतलब ये कि ये भी जो भी ओनर्स होते हैं इसके अंदर, वो भी उनके अपने बैंक अकाउंट्स वगैरह होते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। फिर है एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, मिसाल के तौर पे खादी का आपने नाम सुना होगा, काफी मशहूर ब्रांड है। प्राइवेट लिमिटेड में आपने बीकन हाउस स्कूल सिस्टम का जो रजिस्टर्ड कंपनी का नाम है वो है एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। फिर इसी तरह लिमिटेड कंपनी में है सिस्टम्स लिमिटेड। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ एनपीओ आपको मौजूद नजर आती हैं, वो इस नाम से हैं। ये बड़ा ज़रूरी सोच विचार करने वाला पॉइंट है कि हम एक बिजनेस को कामयाब कैसे कर सकते हैं। तो जनाब, आपको 5 W's ऑफ कम्युनिकेशन समझना है, जो कि हु व्हाट व्हेन वेयर एंड व्हाई। ये हु व्हाट व्हेन वेयर एंड व्हाई आपकी ज़ात से मुतालिक भी हो सकते हैं और आपके बिजनेस से मुतालिक भी हो सकते हैं। इसी तरह 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आपको जानने हैं, जिसमें करेक्टनेस है, क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस, कंसिडरेशन, कॉन्क्रीटनेस, कर्टेसी। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको बहुत अच्छा मटेरियल इसमें मिलेगा। उसके अलावा ये कि आइडा अप्रोच आपको जाननी है, इसमें अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन क्या होता है ये जानना है, ठीक है। उसके अलावा ये कि स्वॉट एनालिसिस जो है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये आपको देखना है। ये आपके बिजनेस के लिए भी हो सकता है, ये आपके लिए भी हो सकता है। उसके अलावा ये कि क्यों कम्युनिकेशन ज़रूरी है टू सेल अ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए। और ये कि अगर आपने अपने क्लाइंट्स, कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स और जो ओवरऑल आपकी जो मतलब सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उसका भरोसा जीतने के लिए, एतमाद जीतने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कम्युनिकेशन की क्या वैल्यू है। होल्स कॉन्सेप्ट एक होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। ये भी आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है। उसके अलावा ये कि आपको निगोशिएशन स्किल्स अपने बेहतर करने हैं। अगर आप करेंगे तो आपको हर कोई समझने की कोशिश करेगा और आपकी कदर बढ़ेगी। अच्छा जी, एससीसीपी की पाकिस्तान में क्या वैल्यू है, क्या और दुनिया भर में क्या उसकी वैल्यू है। पहली तो बात यह है कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि कंपनीज को रजिस्टर करती है। जितने भी मल्टी कंपनीज है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराती हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी को साबित करती हैं। एससीसीपी की जो फी वो आपसे चार्ज करते हैं, वो एससीसीपी का ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयज़ वगैरह की जो सैलरीज होती हैं वो उस पर इस्तेमाल हो जाती है। और ये जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, ये क्लाइंट्स, कस्टमर, स्टेक होल्डर्स, कम्युनिटी, सब में जो है यूज हो रही होती हैं, ठीक है। सबको इन पे एतमाद हासिल होता है, ठीक है, इन कंपनीज पे। और ये चीज़ नेशनली और इंटरनेशनली हो रही होती है। इसके अलावा ये कैसीसीपी बिजनेस जो होता है उसको प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट, सर्विस, सेल्स वगैरह ये चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं। उसके अलावा ये कि फ्रॉड्स का जो चांस है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। और बिजनेसेस जो हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छे रहते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो ओवरऑल आपकी पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो बेहतर होती है। और उसके अलावा ये कि पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है, पाकिस्तान की जो इम्प्रेशन है वो पूरी दुनिया में बेहतर होता है, जितने बिजनेस ऐसे रजिस्टर्ड हों और बड़े लेवल पर रजिस्टर्ड होते हैं।
ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि एक लॉयर है या एक कंसल्टेंट है, उसको हायर करना क्यों ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ ये जो हम लोग अक्सर करते हैं और हम लोग नुकसान हासिल कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपने लॉयर या कंसल्टेंट हायर किया तो ज़ाहिर बात है आपके जितने भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं क्योंकि आपको एज अ बिजनेस पर्सन बात बात नहीं पता होती, वो चीज़ें मतलब उनमें आपको कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे ऐसी स्थिति बार बार आपको कांटेक्ट करेगा कि आप ये डॉक्यूमेंट दे दें, आप वो डॉक्यूमेंट दे दें, वहाँ पे वहाँ पे एक लॉयर और एक कंसल्टेंट जो है वो आपको मदद करता है। ठीक है, उसके अलावा ये कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि आपको मसला कर सकती है लॉन्ग रन में, वो लिखने से आपको कंसल्टेंट या लॉयर रोकता है, आपकी मदद करता है। बज़ाहिर आपको पता भी नहीं चलता, आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डाउनलोड कर लिया इंटरनेट से और उसको एडिट करके सबमिट करा दिया, लेकिन आपको नहीं पता चलता उसमें कोई चीज़ आपके रिलेट करती है कि नहीं करती, तो आपको उसका नुकसान भी हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया। उसके अलावा ये है कि आपको जो भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसमें काम में आपको घंटे लग सकते हैं अगर आप ये सारा का सारा काम खुद करेंगे। तो अगर आप वो काम किसी लॉयर या कंसल्टेंट को देंगे तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, उसके अलावा ये है कि जो भी काम है उसमें कोई गलती नहीं होगी, हर चीज़ ऑन टाइम होगी, यानी कि वक्त पे होगी। उसके अलावा ये कि आप उस वक्त पे दूसरे कामों पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, जिस टाइम पे बिजनेस कंसल्टेंट रजिस्ट्रेशन का काम देख रहा होगा। अगर आप एक कामयाब बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, इनके ऊंच नीच आएगी बिजनेस में, कभी लॉस पे जा रहे हैं, कभी प्रॉफिट पे जा रहे हैं। उसके अलावा कभी अपने आप को ओवरबर्डन ना करें, कभी ज़्यादा काम अपने सर पे सवार ना करें, अपनी टीम के सर पे सवार ना करें, ये आपके लिए चीज़ नुकसानदेह हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा ये कि कभी भी ओवर कमिटमेंट ना करें। ठीक है, और ओवर कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि एक काम जो आपसे ना हो रहा और आपने कह दिया कि मैं कर दूंगा, ये कर दूंगी, तो ये ना करें, ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। और आपके जो इनर कस्टमर्स हैं, यानी कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके जो कहाँ काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, उनको उनको जो है ना आप पहले देखें, उनको फोकस करें ताकि वो आपके एक्सटर्नल कस्टमर्स का ध्यान रख सकें, जो कि कस्टमर भी हो सकते हैं, कंज्यूमर भी हो सकते हैं। एमओयूज ज़्यादा से ज़्यादा साइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज के साथ, उन तमाम कंपनीज के साथ जहाँ पे आपको नजर आए कि कॉमन गोल्स हैं या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आप लोग मिलकर काम कर सकते हैं कॉमन इंटरेस्ट को सेम में रखते हुए। ठीक है। अच्छा, अच्छा, लेस प्रॉफिट इज बेटर देन नो प्रॉफिट एट ऑल, ये चीज़ देखें कि कम से कम प्रॉफिट जो है होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना प्रॉफिट अगर कम भी है तो परेशान नहीं होना चाहिए, ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। अच्छा जी, कामयाब बिजनेस के लिए ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी, यानी कि हर चीज़ में आप लोग मकदार को नहीं देखेंगे, आप उस चीज़ को काम करने का तरीका, उसमें नफासत, ये चीज़ें भी देखेंगे। उसके अलावा ये कि जहाँ पे इनकार करना ज़रूरी है वहाँ पे इनकार करना सीखें। हर चीज़ के अब हरफन मौला नहीं हो सकते। ठीक है, तो जो काम आपको नहीं आता, नहीं हो सकता, उसको आउटसोर्स करते हैं, कोई ऐसा बंदा ले लें अपनी टीम के अंदर जो कि वो काम आपको करने में मदद कर सके, या नहीं आपका ये करना आसान लगता तो आप किसी को हायर करें या किसी को ये काम आगे दे दें। अपनी कम्युनिटी के आसपास के जो लोग हैं उन पर भरोसा करना सीखें। उसके अलावा ये कि हमेशा थोड़ी सी जो प्राइस है वो पहले एडवांस में ले लिया करें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, या माइलस्टोन सेट करें। माइलस्टोन में परसेंटेज होती है जो कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे अक्सर आपको नजर आ रही है। हमेशा बैंक ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करें, कैश पेमेंट्स ना किया करें, वो चीज़ आपके रिकॉर्ड में नहीं रहती वरना। और जो भी कुछ है वो डिजिटल रिकॉर्ड्स में रखें और उसको आप ज़्यादा सोर्सेज से एक्सेस कर सकें। कभी भी एक सोर्स से एक्सेस करने वाली चीज़ ना रखें, नहीं तो नुकसान हो जाता है जब तो वो चीज़ आपके हाथ से चली जाती है। सोशल इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फोकस करें, जो कि एसईओ कहा जाता है इसको, और ये आजकल अब फ्यूचर है आपके बिजनेस का, इंटरनेट के ऊपर रहते हुए। आपको बिजनेस के जो भी प्रोसेसेस में
مسئلہ آتا ہے ان کو گوگل کر کے سرچ کر لیں، ان کے بارے میں جانیں، انہیں سیکھیں، جو بھی بزنس ٹرمز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو سیکھیں، اکاؤنٹنسی میں کیا ٹرمز یوز ہوتی ہیں، فائنانس میں کیا ٹرمز یوز ہوتی ہیں، مارکیٹنگ ایچ آر وغیرہ میں کیا ٹرمز یوز ہوتی ہیں، انٹرنیٹ سے پڑھیں گے سب سیکھ جائیں گے، تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اب امید ہے کہ یہ سیشن فائدہ مند رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو ایک واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی آپ کانٹیکٹ کریں گے آپ نے اپنا نام اور اپنا ریفرنس لکھنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے آپ کب رابطہ کریں اور کیوں رابطہ کریں۔ یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں ہمیں کانٹیکٹ کرنے کے لیے جو وہاں پہ آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں۔ ابھی کے لیے یہ سیشن اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ تعالی اگلے سیشن میں ہم مزید ڈسکشن کریں گے اور مزید چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔